going to start it from 16th of Feb, but due to Saraswati Puja, the batch was now the batch is going to start it from 18th of Feb. The batch was going to start it from the batch was about to start it from 16th of Feb, but due to Saraswati Puja, the batch is going to start it from 18th of Feb. So through this batch, in this batch you will learn how to speak in English. बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि हम इंग्लिश बोले, and due to poor English they will not able to get their favorite jobs, and they will not able to crack the interviews as well. Many people born to dreams, and many Indians have a dream ki how can I speak English fluently. So there are secret, and I will tell you this secret in this batch. What is the natural way which will help you and speak English, speak English. There is no any shortcut. I will going to tell about this in this batch. Let's talk about this batch. Why people are still facing problem in speaking English? Let's have a point. Let's have a point. Before discussing about this matter, I want to tell you about this batch. What you will get in this batch. This batch is very high. This batch has come on the very high demanded. So many candidates, so many my friends, which is doing job in many sectors, who will request me many times, please bring a batch, a spoken batch for me. And due to a busy schedule, I can't fulfill their choices, their condition. But now I have decided that now we have to launch a spoken batch, and they will help so many candidates. So let's talk about this batch. A spoken English first. This is my first batch on YouTube. I have teach so many peoples. I have trained so many people through the offline batches, through the offline mode, but this is the first batch in online mode. Let's talk about this batch. In this batch, you will get live batch. This is a live batch, and you will get the live classes. This is not offline classes. The approach of this batch will be basic to advanced level. What is the basic? What is the means of basics and advanced level? I will start from a basic concepts, and I will complete it till advanced. Course feature will be like that. You will get the daily classes, daily live classes, 4 to 5 days in a week. 4 to 5 days in a week. And the daily has been written there, but this is not the right. 4 to 5 days in a week you will get the live classes, PDF notes, and if you have a partner to practice, for practice, then I am here too, and I will make you partners for practice. So dot session will be also held in this batch. Basics grammar, I will not teach. I am not going to teach you a entire grammar and advanced grammar, but there is also a role of grammar. Without grammar you can't speak effective English. So you can't imagine about that if you don't have a much knowledge of grammar, so you can speak English. Then you will speak you can say very poor English, just rata rataya English, you can say like that. Listening skills, how can you improve listening skill inside you? If you don't have much idea about that, then I will tell you how can you improve listening skill, what is the feature, and how can you use listening skill through the speakings. Self confidence, so many people are there, they have less confidence, they know many things, but whenever they go before these so many people, they will feel very fearful, and they can't able to speak a single line in English. They know many things, they can speak in a particular area where he is alone. जब वो अकेले हैं वो बोल सकते हैं भाई, बहुत सारे इंग्लिश बोल सकते हैं, but
whenever, जब वो जाते हैं among the people, before the people, then their mind has been blanked, because just because of self confidence. They do not have a much self confidence. So I will teach you inside this batch what is the self confidence, how can you increase your self confidence. If you have something, you can kept before anybody. If I know ABCD, how I read ABCD, then I can read it before anyone's. That is my self confidence. That's the self confidence I'm talking about that in this batch. And that kind of self confidence will help you a lot. I can speak you how to speak a natural English, how translate your mind Hindi sentence into English sentence, then you will be able to speak English. You can't, the people are teaching like that, they give you some charts, you just remember that charts and you just speak only that charts. But if somebody can put you, Swati, Priya, good evening sir, good evening, sabhi ko good evening. But if somebody can give you some situation, you can't able to speak English on that particular situation. Why? Because they don't have natural process how to speak in English. They don't have a natural process. And if you don't have a natural process, you can't speak English, bro. You have to mind it. Next point is that public speaking. What is public speaking? One thing you have to remember that, guys. Let's some examples. I will give you some examples like that. If you have a good knowledge about something, for example, I want to tell you one thing. Piyush Alpha, good evening sir, thanks for bring the spoken voice. Thank you so much. Swati Priya, good evening. Sabhi ko good evening, sabhi ko good evening. I'm going to some examples. You are a salesman. And what is the work of salesman? Salesman का काम क्या है? To selling the products. And if you want to sell your products, then you must have to go before the peoples. अगर आप सेल्स बेचना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, then you have to go among the people. And whenever you go among the people, whenever you go before the people, you can't speak a single words. I have seen so many people. They have a great knowledge of English. They have learned so many things in English, but they can't able to speak a single word. Why? They have not a self confidence, and they do not how to take a public speaking. They do not ever attend the public speaking classes. Then I will train you how can you speak in midway of so many peoples. They will not torture you. If you know something, you can put it on somebody else, anybody else. अगर आप कुछ जानते हैं तो आप उस चीजों को कहीं रख सकते हैं मेरे भाई. This is a spoken English as an art. This is not a batch. If I gonna tell you, I'm giving you some charts, you just kept remember from your homes and you just started practicing a lot. This is not the way to speak English, guys. I'm telling you about that. If you want to speak English, then you must follow the conceptual things. You must follow the natural process. What is the natural process? Natural process means if somebody comes in your mind in Hindi, you all know about that. We are all from the Hindi medium boards, Bihar boards know about that. Everybody, we all are from the Bihar boards. And who don't know about the Bihar board? 10 years of my life, they not read a single word of English. Suddenly I have to started learning English, and people are cheated. So many people are started cheating just because the named of a spoken English batch, and people are cheated by himself. People खुद लुटवा रहे हैं यार, खुद लुटवा रहे हैं.
इफ समबडी, एक एग्जांपल देना चाहेंगे हम आपको भाई, एक एग्जांपल देना चाहेंगे। अब मान के चलिए ये नल है, इसमें भैया यहाँ पे टैब लगा है, टैब लगा है। थिंक अबाउट दैट, यहां से हम टैब ऑन करेंगे, यहां से हम टैब ऑन करेंगे, क्या इसमें कुछ है ही नहीं। इफ द टैंक इज ब्लैंक्ड, द टैंक इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है मेरे भाई, एम्प्टी है, एम्प्टी मींस खाली है, तो क्या पानी इस नल से आएगा? आपका जवाब होगा नहीं सर। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू? द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू फिल दिस टैंक, देन आई टर्न ऑफ द टैप, देन द वाटर इसमें से आना शुरू हो जाएगा। देन दैट इज कॉल्ड माई माइंड, यह मेरा माइंड है और ये मेरा माउथ है, मुंह है। मुंह से इंग्लिश तब आएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई हैव फिल सो मेनी वर्ड्स इन माई माइंड, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट्स व्हाई, गुड इवनिंग प्राची, प्रतीक्षा प्राची, I'm speaking English. Why? You ever think about that? Why I'm speaking English? Because I have learned so many words and I am put it on my minds, and my mind full of words, my mind full of concepts, and my mind translated into English, and then I can speak it through the mouth. That is the process. That is a natural process, and that is called public speaking. लोगों के समक्ष आप कैसे बोलेंगे? That is called public speaking, भाई. That is called public speaking. The next point is this body language. Body language is also biggest thing while you are speaking English before somebody else. अगर आप किसी के सामने बोलते हैं तो body language is the most important part of. I'm gonna tell you about that कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है भाई. जस्ट थिंक अबाउट दैट. बॉडी लैंग्वेज क्या है? फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दैट कि if you going to somebody, if you going to before somebody else and they have a great personality and you just don't know about the body language, just like that, hello sir, hello sir, hello sir, up they put it a mic before, hello sir, no, body language, hello, this is Praveen Pratap before you and I'm going to tell about you my spoken batch. I'm here to tell about my spoken batch. This is the body language, and body language is the biggest thing if you want to speak English and if you want to impress somebody. अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं, impress करना चाहते हैं, तो body language is the most required things in a spoken English. So now the next point is communication skills. लोगों के साथ बातचीत करने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए. What is the communication skills? Many people asked me, how can I improve my communication skills? I advise him only one thing. You just swear about that. You just swear about that कि before from today I only speak in English. Whatever I have to learn, even I have started with a single word in speaking English. एक वर्ड से आप स्पीक करना शुरू कर सकते हैं. और जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे, यू कैन नॉट एबल टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपके माइंड कोई बात याद दिलाना पड़ेगा, भाई यू नो इंग्लिश एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश. दैट्स वाई इसीलिए आप कुछ आगे कर पाएंगे या आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड. आफ्टर practicing a lot, you have a build a great effect inside you. आपके अंदर एक गजब तरीके का इफेक्ट आएगा भाई. Now the next point is good manners. What is the good manners? You have to keep in your mind, keep in your eyes while speaking English. Good manners मतलब क्या, ऐसी कौन कौन सी तरीके हैं जिसको आपको माइंड में रखनी है इस चीजों को लेकर, तो भाई that is the good manners. चलिए आप इस स्टार्ट को थोड़ा सा हिंदी में कर देते हैं भाई. बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में जो ठगे जाते हैं और ठगे जा चुके हैं. One people can be cheated by at least 10 times by the name of spoken English. Then I am not like that person. मैं उस तरह के आदमी में से नहीं हूँ, उस तरीके के टीचर में से नहीं हूँ. I am giving a quality content. I'm going to giving a quality content through this batch. आप इस बैच में शरीक होके देखिए, अगर आप मेहनत किए आप इंग्लिश बोल पाएंगे. दैट्स माय प्रॉमिस यू दैट. बिकॉज
आप बोलेंगे सर हाउ कैन यू कॉन्फिडेंट लाइक दैट, बिकॉज दिस इज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई हैव अप्लाइड इट सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों पर मैंने अप्लाई किया है, दे डू नॉट हैव अ मच आइडिया ऑफ इंग्लिश, but whenever I started training anyone's, जब से मैंने उसको ट्रेंड करना शुरू किया, दे स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, डे बाय डे इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली। देखिए एवरीथिंग टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट, सब कुछ होने में समय लगता है, नथिंग कैन हैपन अ सिंगल नाइट्स, कुछ भी एक रात में नहीं हो सकती, यू नो अबाउट इट। इफ यू वांट टू, आप जानते हैं अगर इंग्लिश बोलना, अगर स्पीकिंग इंग्लिश सो इजी टास्क, देन people who are living around me, around us, they started speaking a lot, and India has become इंग्लिश प्रधान देश। सही बात है ना भाई, अगर सब इंग्लिश बोलने लगते और इंग्लिश बोलना इतना आसान रहता तो आज ये दशा नहीं रहती। तो इस बैच के सहारे हम आपको क्या देना चाहेंगे भाई, डेली सप्ताह में 4 से 5 क्लासेज होगी आपकी, आपको पीडीएफ मिलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डेली यूसेज सेंटेंस मिलेंगे, डेली यूसेज वर्ड्स मिलेंगे, और वर्ड्स बहुत सारे हैं उसमें से स्पोकन वाले क्या है, और सबसे बड़ी बात है 200 से प्लस आपको एडवांस स्ट्रक्चर्स हम कराएंगे, बेसिक्स ग्रामर देंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, सारी चीजें रोल प्ले आपको कराई जाएगी थ्रू दिस बैच, और प्रैक्टिस के लिए हम आपके समक्ष खुद ही होंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा अभी हम दिखा देंगे आपको। इस बैच जो स्टार्ट होने वाली थी 16 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं दोनों बैच जो स्टार्ट होगी मेरे भाई, दोनों बैच जो स्टार्ट होने जा रही है वो बैच स्टार्ट होने जा रही है 18 तारीख से। कब से भाई? 18 तारीख से, क्योंकि सरस्वती माँ का अर्चना है और जिसके वजह से हम आपके समक्ष बैच को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज माई कंपल्सन एंड यू ऑल्सो एग्री फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आप भी इस सिचुएशन को से सहमत हो जाएंगे, एंड यू कैन आल्सो फील माय पेन बिकॉज यू आर आल्सो अ स्टूडेंट एंड आई एम आल्सो अ स्टूडेंट। तो 18 फरवरी से बैच शुरू होने जा रही है। बैच का फी बच्चे को देखते हुए, बच्चे नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे साथी जुड़ेंगे, ऐसे हमारे सीनियर्स भी जुड़ेंगे, दे हैव अ ड्रीम टू स्पीक इंग्लिश, दे अचीव सो मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ बट स्टिल दे हैव गिल्टी। वो बहुत सारे चीज अपने जीवन में पा लिए, लेकिन उनके पास अभी भी एक गिल्टी है यार, गिल्टी है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गिल्टी? स्पीकिंग इंग्लिश। दे हैव अ ड्रीम कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, पीपल विल सी व्हेन आई स्पीक इंग्लिश। लोगों का एक सपना है कि भाई हम इंग्लिश बोले, उस सपने को साकार करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और 199 रुपया में हम आपको ये पूरे पढ़ाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी आपके साथ, और लगभग 3 से 4 महीने में आपको पढ़ाएंगे इस बैच के सहारे। अब बात आती है कि भाई हम आपसे जुड़ेंगे कैसे सर? तो आपसे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए भाई, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहेंगे तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कुछ भी करेंगे, हम आपके साथ प्रैक्टिस के लिए हमेशा है। आप हमारे बैच को लेंगे तो भी, नहीं लेंगे तो भी, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू एंड आई एम ऑलवेज हेल्प यू, आई एम ऑलवेज असिस्ट यू, आई एम ऑलवेज असिस्ट यू इन improving your English skills। अगर एक बात आप समझ जाइएगा भाई, टुडे the criteria of this world, if you don't have the skill of English, you can't do much things in your life, and you have a just knowledge of English, you can do much good things in your life। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है, आप ज्यादा चीज अच्छी नहीं कर सकते हैं, एंड इंग्लिश विल मेक बैरियर इन योर सक्सेस। इंग्लिश आपके जीवन में एक कड़ी बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। इंग्लिश विल हिंडर यू टू अचीव योर गोल। आपको रोकेंगे इंग्लिश। सर आई थिंक यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश। प्राची, प्रतीक्षा प्राची, थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब बात आती है भाई कि इस बैच को ज्वाइन कौन कौन कर सकता है। अब बात आती है इस बैच को ज्वाइन कौन कौन कर सकता है। इस बैच को ज्वाइन कौन कौन कर सकता है? हु कैन ज्वाइन दिस बैच? देखिए अब हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि जब ही हमारा सफर शुरू हो जाएगा हम आपके साथ जुड़ेंगे भाई, ठीक है। चलिए, आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। अब हम बात करते हैं भाई
थैंक्स फॉर ब्रिंकिंग स्वाति प्रिया। चलिए हम बात करेंगे आपको किस बैच को ज्वाइन कौन कर सकते हैं। तो पहली बात है, देखिए बहुत सारे बच्चे का कॉल आया था, आप ग्रेजुएशन में है, चाहे ग्रेजुएशन में आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, ठीक है भाई, या कोई भी एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, दिस बैच इज आल्सो गुड फॉर। एक ही बात समझिए यार, एवरीवन हु वांट टू स्पीक इंग्लिश दे मस्ट ज्वाइन दिस बैच। जो कोई भी अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं उसके लिए बैच जरूरी है भाई, कोई भी इंसान हो। आप फॉर एग्जांपल के लिए हम बता दें, दूसरी बात, जो बच्चे 12th का एग्जाम दे दिए हैं, 12th का एग्जाम देकर घर पे बैठे हैं वो बच्चे, उसके लिए तो ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात है, अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं और इंग्लिश के वजह से आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, आप ऑल्सो ज्वाइन। चौथी बात है, अगर कोई ऐसी हमारी दीदी है, चाची है, कोई भी है जो हाउस वाइफ है या होम मेकर बोल सकते हैं, होम मेकर है और उनका सपना है कि हम इंग्लिश बोले। देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी भाभी है, जो हमारी चाची है, जो हमारी बहन है, जो अपने ड्रीम कुछ करना चाहते थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए ड्यू टू फैमिली सिचुएशन, ड्यू टू I don't have much idea about their situation. The people have different kind of situation. Their people have different kinds of problem, and due to problems, the people will not achieve their goals. लेकिन अभी क्या है ना कि अगर आप एक अच्छे हाउस वाइफ, एक अच्छे, if you want to be a great mother and if you want to be your child has a great future, then the only in this world the only teacher cannot bright your future. You have to also work for your teacher, work for your childs. आपको अपने बच्चे के लिए भी काम करना पड़ेगा, सिर्फ टीचर आपके बच्चे के लिए काम नहीं कर देगा। जो भी इस वीडियोज को हमारे ऐसे दीदी, माँ, बहन कोई भी देख रहे हैं और जो पढ़े लिखे हैं और आप सक्षम नहीं है, आपके बच्चे किसी इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते हैं, यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर चाइल्ड्स, बट यू आर एजुकेटेड, देन दिस बैच इज फॉर यू ऑल्सो। आप इंग्लिश, अगर आपके पास इंग्लिश है ना, तो आप उस बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। उस बच्चे को आप क्या दे सकते हैं? उस बच्चे को आप मोमेंट दे सकते हैं, उस बच्चे को आप एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, उस बच्चे को आप एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, माहौल दे सकते हैं, और माहौल के वजह से बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो ये बैच उनके लिए भी है। आप ऐसे समझिए, सभी लर्नर्स के लिए, ऑल लर्नर्स के लिए है, लर्नर्स हु वांट टू स्पीक इंग्लिश, who want to speak English। जो भी आदमी जो भी लर्नर्स है, चाहे हमसे बड़े भाई है, हमारे छोटे भाई है, प्राइवेट सेक्टर्स में है, and they have a issued about spoken English, they can't able to speak English, they can't able to understand their senior instruction, they have faced so many problems and they started googling Google Baba, then you need not and you have to stop this kind of habit. You can become part of this batch, and after completing this batch you will thank me for bringing this kind of batch and a very cheap batch। बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार है, बट दे हैड अ कंडीशन, बस उनके पास एक कंडीशन है कि यू विल मेक मी स्पीक इंग्लिश, आप मुझे इंग्लिश बोलवा दीजिए बस। I have a condition, I will give you so many monies, but I want to tell those person, if you can't work for yourself, nobody can, they're especially educated you, कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकते, nobody can here to teach you, your life is 100% your responsibility, there is no one who assist you, who help you, there is only you who can help yourself। आप खुद है जो अपने आप को मेहनत करेंगे। तो इन सभी बातों के साथ आज हम let's end this session today, and we will meet you again on 18 of Feb on the YouTube classes from the basics of spoken